Good evening, everyone. We have with us today the cast from two shows, Panchayat and Pitchers. Um, Both the shows are comedy dramas, but they belong to two very different worlds, two starkly different worlds. Pitchers is set in an urban startup atmosphere. The characters, the locations, everything is so relatable to today's youth. We all have been in these setups. It's based in Mumbai. Very relatable conversations, very relatable language. I'm sure all of us have felt some connection with these characters. Whereas Panchayat is set in a rural milieu, it shows the lives of 64% of India, yet it is something that we were so unaware of, like how the simple life of villagers are, how they relate to the government, how do they go about their daily processes. So many new insights that we learn from Panchayat. Yet, despite them being from such starkly different world, both the shows were well received. They appealed to a wide audience, and both the shows became hugely successful. Today, we'll start by talking about what made these shows successful. So, Gopal, would you like to start by talking about, if you look back at the two seasons of Pictures, what according to you made these shows so successful? I think the most the important point is relatability, because the content, the characters are so relatable, and in our society, what is happening right now, lots of people are, people are doing engineering. That's the main thing. Actually, more than after graduation, I think we have. Uh, Engineers, every student is doing engineering at least. So it's about their life, it's their language, it's their thought process. So I think that's why, because it's so relatable, I think that's the main cause of the success of Pictures, at least. Faisal, what do you think for Panchayat? What was it that made the show work? I think the most important thing is the basic structure of India and what Indian people want to watch. Because we are still now basically based on the ethics of a country. So वो बहुत ज़्यादा टाइम फैक्टर और काम में काम आता है, क्योंकि हम लोग गांव के ही लोग हैं अभी तक। हर एक आदमी यहाँ से कुछ दूरी का ही होगा। बहुत शहर तो हमारे पास बहुत कम होते हैं ना, शहर तो अभी बने हैं कुछ सालों पहले। तो हम सब का एक कनेक्शन रहा है अपने एक पास्ट लाइफ से। पास्ट इन द सेंस की फैमिली जहाँ से आती है वो उसके हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हमारा भी एक गांव है, गांव में ऐसा होता है। तो उसकी वजह से ये बहुत रिलेटेबल है, और क्योंकि ऐसा हो रहा है अभी तक और होता रहेगा, क्योंकि हम अभी भी हमारे कुछ लाख, सॉरी मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे सकता हूँ, पर है हम लोग विलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं और हम लोग बहुत ही मतलब किसान वाली दुनिया से आए हुए लोग हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और हिंदुस्तान में लोग, मुझे लगता है हिंदुस्तानी कहानियाँ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत कि आप यहाँ का लड़का यहाँ से लंदन चला गया वहाँ की बातें करते हैं। और इसका बेसिक थॉट जो है, जो यहाँ के लोग हैं, जो आप किसी भी बड़े सीईओ से भी मिलेंगे तो वो अभी भी कहता है यार जब हम अपने गाँव जाते हैं ना, मुझे आज भी जाने का मन करता है। बहुत रिलेटेबल है ये कहानियाँ, इसलिए बहुत बड़ा कनेक्शन है पंचायत का। Relatability. Yes, दोनों shows के लिए I think was a important factor. Sunita, you started your career with theatre. You did films. You've done many years of television. You were in Ye Rishta Kya Kehlata Hai for 3 years. After all of that, then you moved on to OTT. Did your approach change with the medium that you were working in, and how in the way that you approach your character, the story? And how did you approach Kranti Devi's role for Panchayat? Okay, hi, good evening everyone. Actually, not only for me, but I think each and every actor, the basic approach is same. To understand the character, the background, surrounding.
And then, yes, because all the three mediums, like when we do theater, we have to be a little louder because that's the way it works. You have to reach out to the last audience. And yes, physically and every way we have to be loud. Whereas in media, be it TV, OTT or films, we are very real because the camera does the work. We only emote, you know. So basically the approach is always the same, at least for me. I don't know, everybody has a different approach, how they build their character and study their character and present their character. But for me, whether it is theater or I perform here right now, or it is OTT or film, first approach is same to understand the character and what the writer and the director wants from my character. Regarding Kranti Devi, again, the writing, actually, all the shows that I have done, like Good Luck and Panchayat, the writing is very strong, very beautiful, and half the work is done. The language, the costume, and the other characters, the co-actors, the directors, they do half the work. So what the audience sees is not alone what work I have done behind that character, but it's a teamwork. So it depends all on everything. So yes, I approached Kranti Devi as I do all my other roles. I tried to understand what it is, how she will behave, and what is the inner psyche of that character. But otherwise, it's all the same. All right. Ranjini, you come into pictures in the second season, and the first season was hugely successful. Jeetu played the character of the CTO, and he became really popular in that show. When you come into the second season, and then eventually at the end of the season, you become the CTO, does the success of the first season and the fact that you are replacing a very popular character in that show become a baggage for you? How do you deal with that challenge? So of course, initially when I was approached for the part, there was, there was like a baggage because of course I myself, I am a big fan of Pitchers season 1. And, but as you see season 2, it's not really that I'm replacing Jeetu in a way, because Jeetu is always remembered, and he always in season 2, in spite of him not being there, he's there as well, right? Like he's still there in their memory, in their, they're constantly kind of talking about him, and it's really established that how everybody is missing him, and the fact that the company really needs him. So of course, as I was approaching my part, and as I was doing it, of course, as the story goes, it's like Apu's character has its own individuality, and of course, as a position, she is replacing Jeetu's position as a CTO. But I would not say that she's replacing Jeetu. That would never be that. Yeah. Similarly for you, Faisal, you also had you were there in both the seasons, but in the second season, you are playing a very different shade. Especially towards the end of the show, you are portraying a very different character within the show. Did your relationship with your character, Prahlad, change in the subsequent season? Yeah, always. It has to be. It's like I have to think about it more deeper in thoughts because of the responsibility I've got. Because I was very scared कि ये नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि मैं खुद नहीं रोता हूँ तो दूसरों के तो जो है वो that's the worst part. But they are very, as in director and the writer, they knows it कि boss ये हो जाएगा because it will work. They मतलब मुझसे ज़्यादा clarity वो थी. But yeah, मतलब अभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा है और ज़्यादा सोचना पड़ता है काम करने के लिए, तो काम ज़्यादा हो गया है. So that's the thing. But yeah, it's a different approach altogether. Or responsibility also in season 3 कि what will happen. So that's the thing. आप भी रोए और आपने हमको भी रुला दिया. Sorry.
Gopal, Pitchers has a very good connect with the youth, especially because of the language they talk in, the setup, the locale, everything is very relatable to our audience. So Pitchers has connected very well with the youth. But if you see on television, we don't see any such show that connects with the audience very well right now, that the youth does not have too many shows for that TG. Do you think the same show would have worked for television as well? आई थिंक मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता. आई थिंक अगर कहानी अच्छी है, अगर कहानी रिलेटेबल है, तो वो किसी भी मीडियम में वर्क करेगी, वेदर इट्स थिएटर और फिल्म और OTT और वट एवर. सो द पॉइंट इज़ कि अगर जैसे हमने टेलीविज़न में भी बहुत अलग तरह के बहुत डिफरेंट कहानियाँ देखी हैं. मतलब अगर मैं हमारे बचपन का टेलीविज़न थोड़ा देखें तो मालगुड़ी डेज से लेके, मुझे नहीं लगता कि मीडियम से फ़र्क पड़ता है. अच्छी कहानी अगर किसी भी मीडियम में आएगी तो पीपल विल वॉच इट, पीपल विल रिलेट टू इट एंड पीपल विल एंजॉय इट. सो है OTT में कुछ फ़ायदे हैं, थोड़ा उतना अभी सेंसरशिप का प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा जो यूथ का जो लैंग्वेज है, जो जैसे आज का यूथ बात करता है, हम वैसे कर सकते हैं. टेलीविज़न की कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके अपने SNPs हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है. बट अगर कहानी अच्छी है तो आई थिंक कहीं भी लोग देखेंगे. सुनीता, आपने टीवी में काफ़ी लंबे समय तक काम किया है, तो आप उस कंटेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं. आपको क्या लगता है, हमने काफ़ी टाइम से एक रूरल ड्रामा टेलीविज़न पे नहीं देखा है. वुड पंचायत हैव वर्कड फॉर टेलीविज़न? नो, आई थिंक पास्ट फ्यू इयर्स टीवी का सिनेरियो थोड़ा बदला है. उन लोगों ने भी थोड़ा रियलिस्टिक एक्टिंग, रियलिस्टिक अप्रोच जो है स्टार्ट कर दी है. और पिछले सालों में काफ़ी ऐसे शोज़ हुए हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली को और हमारे जो बिहार है और MP है या फिर हमारा पंजाब हरियाणा है, उसको जो है उन्होंने यूटिलाइज़ किया है, उसके कल्चर को यूज़ किया है, राजस्थान के कल्चर को यूज़ किया है. और जैसा गोपाल ने बोला कि मीडियम कोई भी हो, अगर वो अपील करता है और कहीं ना कहीं लोग उससे कनेक्ट करते हैं, तो वो टीवी में भी काम करता है और वो फिल्म या OTT में भी काम करता है. तो आई थिंक व्हाट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली राइट कि टीवी में भी जो है अभी काफ़ी जो ग्लैमरस एक अप्रोच थी वो कम हो गई है, बहुत कम हो गई है. All of you have spoken about being typecast in different times in your career. आपने एक कोई रोल प्ले किया है, जैसे आपने कहा है आपके इंटरव्यूज़ में कि सुनीता मैम ने कहा है कि उनको काफ़ी टाइम तक मेड के ही रोल्स मिल रहे थे आफ्टर प्लेइंग वन पर्टिकुलर मेड रोल. वैसे ही फैसल, आपने भी कहा है कि आपको काफ़ी आपके एडवर्टाइजमेंट्स में भी हम देखते हैं कि आपको वैसे ही रोल्स मिल रहे हैं जैसे आपने पंचायत में प्ले किया है. रंजनी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, do you think that OTT has solved this problem of typecasting for you at least, where do you get a wider scope of roles now? Yes, I would definitely, and also like I feel that, I mean, of course, OTT plays a huge role in lot of things, like lot of ways in as actors, because even in OTT, you know, if the character is supporting the primary character or the protagonist, that character also has a story, and that character also has a graph, and you know, so you get so much of opportunity to, you know, explore the character, of course. But I feel that as far as typecasting is concerned, yes, definitely, because it has really affected, you know, all of us in a very in like varied ways. So because, but you know, I also feel that getting like the struggle from you know, the struggle of getting out of being typecast is a long and is a tough struggle, because you know, like jab tak again aap nahi bologe, when you are not firm about the fact that you're not going to play that part anymore, and you know, that the other, you know, the director, the producer, the casting people, they don't see you in that way only, you know. So it is a very, very long and a long drawn process and a tough process as far as actors are concerned, you know, from our side. And I feel that
As far as typecasting, I wouldn't say it has completely gone. Okay, I mean, I feel that it's still there. OTT has, because in, like in OTT also, I also struggle with kind of, really, with the parts I'm offered, with the kind of, so I think that is a universal factor, like not a medium factor. Like in film also, like once that typecast is broken in any medium, then the other mediums also get affected. Like, then you win over other mediums also. Like you have to really keep on proving your versatility as an actor in whichever medium you are, acting in. Sunita, you want to add something to that? Yeah, like our consumer is audience. So what they demand works here. It's an art business. No, I think people love art, but through this they are earning money. It's their business. So they will work as per the consumer's demand, that's audience. And at times, even audience, they are not ready for the changes. Because when I go in small towns and they ask, okay, who is the hero? And if you take some name, they say, ye hero hai. Because they have an image and they want to see a hero or a heroine in that particular, personality. वो आप ऐसे बहुत सारे, I don't want to take names, जिन लोगों ने बहुत अलग-अलग रोल किए तो उनका वो काम ही नहीं चला. और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है. Like I have been doing same typical roles. कभी मतलब out of a blue, if I get a different role, then it's luck by chance. And as an artist, because it's my bread and butter, I can't saying no to work. We have to wait till the time comes where I have the stability of saying and okay, I will not do it for 2 more years. But then what do? People just love and they want to see you in that particular role. When a writer writes a role, your name is in their mind. If you show a poster of a film or a series and you just put pictures and you don't put what actor is playing what character, they will make their own story कि ये तो यही कर रहा होगा, ये comedy ही करेगी, ये negative ही करेगा, they can't expect and they will not take it कि एक like any big hero is doing a like lower middle class or a beggar's role. They won't take it. They want them to be like good looking, muscular, dancing, beautiful. So I think it all depends on the audience. And it's a business, so they will do what the consumer demands. That's true. All of you have worked in this field for years, for almost 2 decades, other than Ronjini, of course. So, but you have worked across mediums. You have started, you've done films, theatre, television, OTT. Your debut in OTT somehow seems to have brought you a lot of fame, success, has changed your life. Would you all like to talk about that? Gopal, would you like to start? You started your career with Mujhe Kuch Kehna Hai. It's over 2 decades. But the kind of success and fame that OTT brought you was very different, right? Would you like to talk about that? Yeah, I mean, it's not just the success, I mean, fame-wise or money-wise. The OTT का एक बहुत important role जो है वो है ये कि now people are telling different kind of stories and stories from all over the world. I mean, अभी हम कोई अगर मिर्ज़ापुर का एक कहानी देख रहे हैं तो हम एक साउथ का कहानी तो OTT की वजह से the thing is कि अगर आप different कहानियाँ कहोगे और जो सोसाइटी से समाज से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं तो ऑडियंस वो देखना चाहती है. मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यूपी का अगर एजुकेशन सिस्टम में क्या स्कैम चल रहा है वो मैं देखना चाहता हूँ. और तो वो एक तो वो कहानी इंटरेस्टिंग है. दूसरा ये जो आप पहला सवाल था वो समहाउ ये भी सॉल्व करता है टाइप कास्ट का प्रॉब्लम बिकॉज नाउ आपके पास इतने अलग कैरेक्टर्स हैं. अदरवाइज़ हमारी फिल्मों में एक सेट तरह का स्टोरी होता था, एक हीरो हीरोइन और उनकी कहानी. बट अब कहानियाँ इतनी डिफरेंट हैं और कैरेक्टर्स उसमें इतने डिफरेंट हैं कि परफॉर्मर्स को, एक्टर्स को भी अलग तरह की कहानियाँ, अलग तरह के रोल करने को मिलते हैं. तो OTT ने
ये तो किया ही है जो आप कह रही हैं कि बहुत सारे अच्छे एक्टर्स को मौका दिया है, पर उसके अलावा ये जो अच्छी कहानियाँ कहने का जो प्लेटफॉर्म है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी बात है। Faisal, how has OTT changed your life? You also started with films. नहीं, मैंने तो एक्चुअली म्यूज़िक डायरेक्टर और 2-4 काम छोड़ दीजिए अगर क्रिएटिव, तो ये जैसे भी मैंने सब किया हुआ है। तो मैं शुरुआत में प्रोमो डिपार्टमेंट में था, प्रोमोस किया है, नौकरी की है, एडी बनाऊँ, नॉन फिक्शन किया है। तो वो करते करते अभी एक्टिंग हुई है तो उसमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा आराम रहता है। बाकी सारा अब मैं शो भी बनाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ। हाँ, चेंज हुआ है, क्योंकि वो चेंज का जो पहला सवाल दूसरा सवाल एक जैसे मतलब पास क्यों है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो बनाते हैं ना, जो सोचते हैं वो अमेरिकन टीवी देखते हैं, फिर हम सोचते हैं ऐसा प्लेटफॉर्म में 10 चीज़ें होनी चाहिए। ये पहले टीवी में भी शुरू हुआ था, पर हम उनको देखते हैं पर उसमें से 5 चीज़ लेते हैं, 5 चीज़ छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे उन्होंने HBO जब बनाया तो उनके पास एक सॉलिड शो था, बोर्ड वॉक एम्पायर। उसमें जो हीरो था वो कभी हीरो नहीं था लाइफ में, पर उसको बनाने वाले सेट थे कि हमें ये बनाना है। वो A से लेके Z तक पूरा डिपार्टमेंट साथ था उसको करने के लिए। हमारे क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम ये बनाएंगे, पर इसके लिए हमको हीरो चाहिए होता है। वो कहानी स्ट्रांग होती फिर भी उनको हीरो चाहिए होता है, वो एक्टर लेके नहीं बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ें होती हैं। चेंज क्या होता है कि चेंज मेरे हिसाब से मेरे लिए चेंज क्या है कि मुझे किसी ने एक ऐसे रोल के लिए बोला जो मैं एक्टिंग भी नहीं करता था, पर वो लोग तैयार थे कि हाँ तुम कर लोगे, हमने एक बार थोड़ा सा देखा हुआ है। मेकर वर्सेस का जो कहते हैं ना कि मेकर से डिपेंडेंट है पूरा चीज़ें, राइटिंग से डिपेंडेंट है। हम लोग बोल देते हैं कि अभी OTT चेंज कर रहा है, पर OTT उसे भी चेंज करने में सोचता है कि साइड में हीरो डाल दूँ क्या, वैसा हो जाता है। वो बहुत ही अजीब सा होता है, क्योंकि आप ही देखिए ना कि पूरा आपसे लेके तब तक चेंज ऑफ लाइफ क्या होता है कि जैसे मेरी लाइफ में चेंज नहीं, मतलब एक्टिंग करने के बाद मुझे सुबह से लेके ये 1 हफ्ते में 10 कॉल तो आती है पुलिस वाला बनने की। मेरे पापा का भी सपना नहीं था पुलिस बनाने का, पर टेक्निकली हर एक आदमी देख के बोलता है चलो पुलिस करोगे क्या, एक आदमी है जो बहुत कमीना है। मैंने कहा अच्छा ओके ठीक। तो वो लगातार है। चेंज ऑफ लाइफ क्या होता है कि हाँ अब मेकर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है कि ये एक्टर अगर ये कर सकता है तो उसको ये भी कराना चाहिए। वो मुझे लगता है 100 में से 5 ही लोग सोचते हैं, 95 लोग ये नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं बस यही है, इसी को ले आओ, मोटा है ले आओ बस इसको, वैसा टाइप का है। तो वो है, चेंज है बिकॉज ऑफ मतलब कि चेंज से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि और अच्छा करो अपना। पहले कुछ काम था कि साइड में कहीं छुप के कर दिया, अभी क्या और काम करने के लिए और वो होता रहता है। कोई काफ़ी लोग जो हमारे साथ हैं ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं इन्हीं को देखता हूँ। ये लोग बिजी रहते हैं, मतलब नहीं रोज़ ही, और रोज़ एक्टिंग हो नहीं पाती है, तो मतलब ऐसा तो इट्स लाइक दैट। बट हाँ अच्छा है, चेंज ऑफ लाइफ है इसको और करने पे। अगर ये चेंज सबके लिए एक साथ अगर रहेगा ना तो 10 शो हम एक साल में 100 शो बनाते हैं, 5 अच्छे होते हैं, वो स्पीड फिर बढ़ के 45-50 तक चली जाएगी, क्योंकि वो चेंज सब में होता है ना। किसी ने जैसे बैटमैन को बुला के बोला कि ओजाक डायरेक्ट करो, वो मतलब वो आदमी, या फिर स्पाई कराया किसी ने साशा से, तो पर्पस था ना पूरे मेकर का कि बॉस ये एक्टर ये करेगा पहली बार, उसके पीछे बहुत बड़ा पैसा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा चेंज होने में टाइम लगेगा। यस सर। Ronjini, how did your OTT debut change your life? So I actually started out with theatre, and then I started out with theatre. Then I was also I did films. Then I did television also, and honestly, with OTT, options and opportunities, बढ़ गए ज़्यादा. And also the kind of work for me personally that I want to do became more available in OTT. Like, of course, films used to be, is very, it is difficult because, like there are scarce, मतलब वो scarce number of like ये है films that are being made, and there are a lot of things like, because of course there is a star system that's also there, and it's a it's a long process to kind of, to really get into that and all of it. Television is, I feel that, of course, it's a personal journey, I feel. And obviously, that's also another world of, medium. But
as far as OTT is concerned, I feel it changed. It suddenly, for me, it really widened a lot of opportunities, because, and also I was I am also kind of relieved with the fact that the kind of content that's being made, and it's really, I'm able to do. I'm getting closer to what I want, the kind of work I want to do. And of course, and I feel that OTT being, apart from being, obviously approachable for all actors, it has its pros and cons, because of course the platforms are also looking at the number of followers you have and the number of, so the box office also changes here, like, but the nature changes, like jo box office jiske, the people who are able to kind of, so of course it's a business, as you said, that is there for sure, like, but yes, for me it has really widened a lot of opportunities, yeah. Sunita, your life, how has your life changed after becoming Bittu ki mummy? Yes, people have started giving me respect as an artist also now. I know I have been doing TV for the past 10-15 years, but then I was just a character and least respected. But now, after doing Bittu Ki Mummy, people used to recognize me earlier also. And all my producer, directors, all my co-actors and audiences, they have always given me love. But the love combined with respect, that has come after doing Good Luck and Panchayat. So that has changed a lot. Everyone says for actresses, their careers over after they become mummies. I think for Sunita, her career shot up after becoming Bittu ki mummy. Audience, would you all like to ask any questions? हेलो एवरीवन, गोपाल और आप सब लोगों की जब मैं बात सुन रहा था तो मैं एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोग कंटेंट पसंद करते हैं। हमें ये लगा कि आप लोगों के लिए OTT प्लेटफॉर्म जैसी कोई जगह नहीं थी पहले, जिसकी वजह से न जाने कितने अनगिनत एक्टर वो कंटेंट हमारे सामने नहीं ले आ पाए होंगे। OTT प्लेटफॉर्म थोड़े से ओपन सोर्सेज वाले थे, नेपोटिज्म से दूर थे, खाली था मैदान और आप जैसे लोगों की एंट्री होती है और आप छा जाते हो। लेकिन धीरे धीरे जब बिग स्टार वापस इन OTT प्लेटफॉर्म पर छाने लगे हैं, ऐसे में जो आपके पीछे कतार में आने वाले लोग थे जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं बन पाई थी, क्या उनके लिए वापस ये प्लेटफॉर्म खुला रहेगा या आने वाले समय में इसको बिग स्टार ही टेक ओवर कर लेंगे? देखो, जैसे सुनीता ने कहा कि इट्स अ बिजनेस और ऑडियंस जो देखना चाहती है वो तो वही जो है वो लीड कर रहा होता है पूरे सिनेरियो को। बट क्योंकि OTT का वो इतना बड़ा है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे शोज़ बनते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी रहेगी हमेशा। और आई एम लिटिल होपफुल कि धीरे धीरे वो स्टार सिस्टम थोड़ा कम हो रहा है और होगा, ये मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी कहानियाँ आएंगी और अच्छे लोग एक्टर्स को देखना चाहेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो मुझे तो लगता है ज़रूर कि आने वाले और भी अभी भी हम देख रहे हैं जो नई नई सीरीज़ आ रही हैं उसमें एकदम नए नए एक्टर्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उम्मीद तो है। और मुझे लगता है जो स्टार है ना वो भी आम आदमी बन जाएंगे, वो पीछे वाली कतार में आ जाएंगे। कैन आई आस्क द क्वेश्चन? मुझे एक सवाल पूछना था टू फैजल एंड सुनीता। मुझे पंचायत बेहद पसंद आया, पर मैं आई कुड नॉट स्टॉप वॉचिंग इट। बट मैं देखता था यार कि स्टोरी मूवी नहीं हो रही है। उसकी वो मोटरसाइकिल ख़राब हुई तो उसी पे 15 है, फिर कुछ लोकल गुंडों से कुछ बहस हो गई तो वहाँ ही 20 मिनट उसमें चले गए। बट आई कुड नॉट स्टॉप वॉचिंग एंड इट वॉज मूव, द स्टोरी मूव सो स्लोली। वो आता है फिर वो पंचायत का दफ्तर गंदा है। आई मीन जस्ट वाई वॉज इट कि वो स्टोरी इतनी स्लो थी, स्लो है और फिर भी उससे नज़र नहीं हटती। मैजिक नहीं सर, उसमें क्या है कि जैसे
एक होता है खालीपन में एक जगह चल रही होती है। एक कोई शहर या गांव होता है ना, जैसे मैं अपने गांव में जाता हूँ तो 2 आदमी बैठ के 2.5 घंटा इमली के बारे में बात कर सकते हैं और वो कहीं नहीं जाएंगे। ये सच है। वो पूरा दिन चला जाएगा, वो दोनों आदमी एक जगह बैठे हुए हैं, ना ही वो बियर भी नहीं पी रहे, वो चाय 12 हो चुकी है, पापड़ वापड़ खा लिया, इमली से उसके गांव, गांव से उसके पीछे, और इस इमली की वजह से क्या क्या बवाल चल रहा है। ये आपको अगले दिन वो फिर आपको मिलेंगे और फिर इस पर बात हो जाएगी। जैसे बहुत से हमारी मतलब दादी पुप्पी हैं, वो सुबह आके बताएंगी कि सुबह से एक बूंद कुछ नहीं खाया, 2 गिलास दूध पिया इतना सा। अब वो इतना 2 गिलास दूध समझ में नहीं आता क्या होता है, मतलब कुछ नहीं खाया, सर में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है। और उसने सारी दवा उन्होंने उनको बताई, उन्होंने वो दवा बताई, ये 20 साल से चल रहा है। अब वो लोग 50 से 70 के हो गए, उन्होंने 14 डॉक्टर का नाम और बता दिया कि यहाँ गांव जाइए, वहाँ से राइट ला है, ये तो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, अग्रवाल बहुत अच्छा दिखता है। अब वो बात हो चुकी है। ये बात को इसीलिए स्पेस की अच्छाई भी क्या है कि ये हो सकता है कि 2 आदमी बैठ के स्कूटर के बारे में बात कर रहे हैं, और वो अभी और तो देखिए वहाँ से सरकार तो गिरा नहीं सकते हैं, ना ही जाके कहीं कुछ हो सकता है। यही में उनका दिन जो है ख़त्म हो जाता है, रात के 9 बज जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, 5 बजे फिर शुरू जाते हैं। क्योंकि उनके टाइम फ्रेम के हिसाब से वो जो स्पेस है ना, उसको अगर बहुत तेज़ कर देंगे ना, आप देखिएगा टेस्ट करने के हिसाब से भी, तो फिर वो ऑडियंस उससे टूट जाएगी। क्योंकि एडिटोरियली बाकी जो शो है ना, बहुत फास्ट पेस दुनिया में चलता है। बच्चा अभी मरा, गोली मारी, बढ़ गया, 20 साल बाद ट्रेन चली, आगे चले गए, ठीक है। इतना तेज़ आपने 3 सीन में कर दिया है, ख़त्म हो गई कहानी। यार ये तो क्या, वो जो डेली बेसिस पे 5 लोग जो, क्योंकि इसीलिए वो जो लड़का बाहर से आया हुआ है ना, वो एक फास्ट पेस दुनिया से आता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है भाई कि ये लोग इसी में ही चल रहा है कि तो भाई चाबी खो गई तो चाबी ढूंढने चले गए, और किसी से झगड़ा हो गया तो उससे 3 आदमी झगड़ा। तो स्पेस बहुत मतलब मुझे लगता है कि वो एक तरीके का टूल है उन्होंने जो वो यूज़ कर रहे हैं। तेज़ होगा तो शायद वो मुझे लगता है वो काम नहीं करेगा। इसलिए जो आप महसूस कर रहे थे शायद वही वो कैरेक्टर जीतू महसूस करता था उस गांव में आकर। सो इट इज या तो वो मतलब ये एक, मैं अपना ही शो है इसलिए तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट ये एक काबिल तारीफ बात है कि वो महसूस कराना देखने वाले को और उसको उसमें उतना ही जुड़े रखना, ये जो है ये इसकी बनावट है। हम लोग आज हर कोई इतनी तेज़ ज़िंदगी जी रहा है कि हमको अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन हमें को लग रहा है ये फटाफट क्यों नहीं हो रहा है। सो आई थिंक वो कहीं अंदर झचोड़ना कि भाई अब थोड़ा आराम से रहो, थोड़ा ज़िंदगी को जियो, भागो मत। That's all Thank we you, have sir. time for, audience. Really sorry. Thank you so much, panelists, for taking the time for this, and thank you, audience, for listening to the conversation. That was our final power panel for today. Can we have a huge round of applause? Because a lot of the things that were shared, आपने बड़ी दिल से बात की, बड़ी honestly हम सभी से बात की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. ये हमारे तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट, a small memento, memory, yes, live. जैसे वीडियो ऑन डिमांड होता है ना, यहाँ पे फोटोग्राफ्स ऑन डिमांड है. Yes, that's for you. And Benita, that's yours. All right, please come closer together. Actors doing what they do best, discussing their looks. Please come forward. We'll take a group photograph.